Ladies and gentlemen, my name is Salmeen Ansari and I welcome you back to another fantastic episode of Contourcast, Podcast for Life Season 3. उमूमन जो बच्चे अपने बचपन में इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं पाते हैं, वो अपने आप को ना सिर्फ आइसोलेटेड फील करते हैं, बट शायद उनकी ज़िंदगी आगे जाके थोड़ी मुख्तलिफ हो जाती है, कभी थोड़ी मुश्किल भी हो जाती है. लेकिन हम ऐसे शख्स से मिले जिसने अपने बचपन में ऑल्दो कम फ्रेंडशिप्स देखी, लेकिन उन्होंने अपनी जर्नी को ओन किया और एक बहुत ही बेहतरीन इंसान बन के सामने आए. मैं बात कर रही हूँ साकिब शकील की. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल चाल है शमीन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? माशाल्लाह एकदम फर्स्ट क्लास. तो साकिब, आपने बहुत ही ओपनली बताया कि यू स्पेंट योर चाइल्डहुड इन दुबई एंड अबू धाबी. ना वहाँ ज़्यादा दोस्त अहबाब थे, ना वहाँ कोई रिश्तेदार थे. व्हाट वाज योर चाइल्डहुड लाइक? देखिए दुबई में अच्छा अब तो कल्चर बहुत डिफरेंट है. अब बहुत मॉडर्नाइज सिटी हो चुका है. उस ज़माने में ना वो सिटी इतना मॉडर्नाइज था, ना ही जैसे आजकल जो है ना बहुत सारी क्या कह सकते हैं कि देसी फैमिलीज. इफ़ यू आर इन दुबई यू हैव अ लॉट ऑफ फैमिली देयर. राइट. ठीक है. अब मैं वहाँ पे था, लाइक आई लेफ्ट इन 96. ठीक है. तो उस वक्त जो है ना ये वाली कहानी नहीं थी. राइट. ठीक है. लाइक हमारे पास जो मैक्सिमम जो हमारे रिश्तेदार थे, एक मेरे मामू थे जो अबू धाबी में थे, हम दुबई में आ गए थे, और एक मेरे चचा थे जो कि दुबई आए थे. अच्छा, वो चचा जो थे वो ही वाज द हिटलर ऑफ द फैमिली. बड़े ही सख्त और बड़े ही यानी कि खतरनाक किस्म के वो थे, पर्सनैलिटी थी उनकी. छोटे चचा थे मेरे. लेकिन जब वो आए थे ना, वी वर सो एक्साइटेड. वी चेंज्ड ऑल द फर्नीचर एंड वी एक्चुअली पॉलिश्ड द carpets and we washed everything and we were like excited for Cedar, and he was a Hitler and we were we couldn't talk to him. Right. But even then, because it was someone who was Who's a relative, coming? Yeah. so we were very excited. So वहाँ पे ये हमें एक मसला रहा था. देन अगेन मेरे भाई बहन थे. मेरा भाई मुझसे 1.5 साल बड़ा है, मेरी बहन में से ट्विंस है. तो ठीक है, एक तो गैदरिंग तो थी हमारी घर की अपनी थी, लेकिन आउटसाइड दैट बहुत फ्रेंड्स नहीं होते थे. राइट. जो कि जनरली कराची में जो एक होता है अजम्पशन ना, कराची में बड़े होते हुए कि आपके मोहल्ले में लोग होंगे और गेम्स खेल रहे होंगे एटसेट्रा. तो वो चीज़ रहती थी. तो वहाँ पे आपको हर चीज़ जो है अपने आप को इंगेज खुद करना है. ठीक है. यू नीड टू फाइंड वेज अराउंड स्टफ. ठीक है. खाना पकाना सीखना है तो अब जलेबी पकाना सीख रहे हैं हम लोग. आई वॉज ऑलवेज इनटू क्रिएटिंग समथिंग विच इन द किचन विच नो वन एल्स वुड. तो अब क्या करें, तो जी जलेबी बनाएंगे. जैसे बड़े होके अब स्टेक बनाने का शौक हुआ है. राइट. आज तक वो एक्सपेरिमेंट कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट एक्सपेरिमेंट्स का शौक रहा है. राइट. ठीक है. सो दैट इज समथिंग विच आई लाइक टू डू. ओके. और वो उस वजह से ही है कि वो बचपन में, क्योंकि वो फ्रेंडशिप्स उतनी नहीं होती थी. राइट. तो यू नीड टू फाइंड योर वेज अराउंड टू एंगेज योरसेल्फ. एब्सोल्युटली. बट यू डिड फाइंड वन वेरी इंटरेस्टिंग पाथ व्हिच वाज 7th ग्रेड में आपने कोडिंग शुरू कर दी थी. तो उसमें भी बड़ा मजे की चीज़ है. हम लोग को 6th ग्रेड में जो है ना पहली दफ़ा एक कंप्यूटर दिखा स्कूल में. लैब में लेके गए, उनका ये कंप्यूटर है एंड यू कैन प्ले दिस गेम. एक गेम खेला तो गेम में तो इंटरेस्ट आई थी, बात है बच्चे थे, हो गया. लेकिन फिर हमने अब्बू को तरफ प्रेशराइज किया कि यार अब्बू हमें पीसी चाहिए. अब्बू हमारा ये था कि हम लोग जो है ना, हम लोग बड़े कैलकुलेटेड किड्स थे. हमारे अब्बू का ये था कि वी न्यू व्हाट हिज सैलरी वाज, व्हाट हिज सेविंग्स वाज. तो अगर इफ यू आर गोइंग टू डिमांड समथिंग, यू हैव टू सबमिट अ प्रोजेक्ट प्लान. ठीक है, कि इसका बेनिफिट क्या है आपको, ये कितने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितना ऐसा चलेगा. तो यू नीड टू बी आपको, अब जैसे ये लाए थे कंप्यूटर खरीदना है हमें, तो बाय एन हम तीनों भाई बहन का होगा. ठीक है. इट्स नॉट लाइक कि साकिब कुछ चाहिए, नहीं. तीनों भाई बहन मिलके बोलेंगे यार हमें ये चाहिए, हमें इससे कैरियर में ये बेनिफिट नज़र आ रहा है, आगे ये सीखने को मिल रहा है, ऐसी बात है, एंटरटेनमेंट पर्पस भी हैं. तो इस तरीके से हम लोग अब्बू के पास गए, वी बॉट दैट कंप्यूटर. अब जब कंप्यूटर आया तो गेम्स तो 2 दिन की बात होती है. अब क्या करें, हमने स्कूल में प्रोग्रामिंग मैंने नहीं सीखी, भाई ने सीखी. राइट. बिकॉज भाई 8th में था, मैं 7th में था. 8th में उनका एक प्रोग्रामिंग का कोर्स आया. ओके. तो उसने तो इफ्स एंड फॉर लूप वगैरह सब सीखे. अब मैंने कहा मैं क्या करूं, तो उसकी बुक ली. पहले चैप्टर में इफ था, इफ पढ़ा. अब हमने इफ पे बोला, इफ आगे तो समझ नहीं आ रहा फॉर वगैरह. तो अब इफ पे हम जो है ना एक प्रोग्राम बनाएंगे जो कि 1000 लाइन का होगा. ओके. तो हमने स्ट्रीट फाइटर गेम के एंड डायलॉग्स वगैरह बन गए. वो एक प्रोग्राम बना दिया जो इनपुट देता था कि भाई
कौन सा प्लेयर चाहिए, उस प्लेयर के क्या एंड के डायलॉग्स वगैरह रहे हैं, राइट तो जस्ट टू फिल इन द लाइन एंड स्टफ लाइक दैट. ठीक. सो अर्ली ऑन आपको प्रोग्रामिंग का इंटरेस्ट हो गया, चाहे आपको आती थी नहीं आती थी. अब क्योंकि यहाँ कहानी ये थी कि एवरीथिंग यू हैव टू डू योरसेल्फ. राइट मेरा भाई भी जो है ना, वो इस किस्म की नेचर थी उस जमाने में कि ही वुड से कि नहीं, ये तो मैंने सीखा है, मैं तुम्हें क्यों सिखाऊं. ये भी था. He was अच्छा a big ओके. brother. तो इतना हम लोग के बीच में कंपटीशन था कि जो उसको आता है वो मुझे नहीं सिखाएगा, मुझे आता है मैं उसको नहीं सिखाऊंगा. इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. तो फिर जब हम इंटर क्रॉस किए तो हम लोगों ने एक कोर्स किया VB6 का, या इंटर में ही था तब किया था. तो अब दैट वाज अ VB5 कोर्स बेसिक, नॉट 6 आई नहीं थी उस वक्त. तो कोर्स किया तो उसमें हमने बिफोर दैट कोर्स हमने एक एग्रीमेंट किया कि ओके. देखो अब तक तो ये लाइफ में चलता रहा है कि मैं तुम्हें ही सिखाऊंगा, तुम मुझे ही सिखाओगे, बट नाउ दिस इज एन इन्वेस्टमेंट. या ठीक है, वी आर गोइंग टू द मार्केट टू स्पेंडिंग सम मनी. राइट तो यहाँ पे जो है वी हैव टू स्टॉप दैट. राइट हमें दोनों को साथ सीखना है. राइट. ओके. ठीक है. देन वी सॉर्ट ऑफ गॉट इनटू दैट अरेंजमेंट कि हाँ यार, लर्निंग जो है साथ होती है. और ये एक विद द पैसेज ऑफ टाइम ही ये एहसास होता है कि आपकी रिलेशनशिप इवॉल्व करती है और वो नेचुरली इवॉल्व Yeah. करती है, और बचपन में ऐसी बात है, भाई बहनों का थोड़ा सा चलता ही है. अच्छा, यू मेंशन सॉरी दैट यू हैव अ ट्विन एंड द ट्विन इज अ सिस्टर. या. सो भाई के साथ तो कंपटीशन का आपने बता दिया, बहन के साथ क्या डायनामिक है? अच्छा, बहन के साथ डायनामिक थोड़ी डिफरेंट थी. अच्छा, टेक्निकली मैं बड़ा भाई था, बिकॉज आई वाज 7 मिनट्स ओल्डर. 7 minutes old. अच्छा ओके. तो बगैर द सिस्टर इज द बॉसी वन. अच्छा ओके. ठीक है, वो तो अब्बू को भी बॉस कर रहे, वो उस किस्म की नहीं है. अब्बू ने उसको डांटने की बात करती थी, बोलती है पुलिस को बुला दूंगी मैं. अब्बू से वेरी पिट रही है. असर्टिव. Very ओके. assertive. तो उससे आप कुछ करवा नहीं सकते. लेकिन देन अगेन साथ पढ़ रहे हैं, साथ उठ रहे हैं, साथ बैठ रहे हैं, राइट. दोस्ती भी बहुत है, लड़ाई भी बहुत है, और वी वर सॉर्ट ऑफ अपोजिट ऑफ ईच अदर्स. रियली? ठीक है. मैं जो हूँ, आई वाज लाइक मैथ्स में पूरा बुक कर लो, शी वॉज गुड एट एवरीथिंग. ओके. तो शी वुड गेट 95% डन, मगर जो 5% वो नहीं कर सकेगी वो मैं करूँगा. वो अल्लाह ताला का एक निजाम आई हाँ. थिंक है इस तरह. तो वी हैड वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटीज एंड वेरी डिफरेंट एबिलिटीज. ठीक है. तो उसके साथ ये था, शी वॉज वेरी हार्ड वर्क. यानी कि ओके. वो पूरी रात लगाएगी कि असाइनमेंट है एंड आई विल वर्क द होल नाइट. ओके. आई वॉज द वन के असाइनमेंट है तो क्या हुआ, दवा करो. ट्राई करो, 2 घंटे नहीं हुआ नहीं हुआ. ठीक है. अच्छा. मगर अगर आप बात करो कि लर्निंग एबिलिटीज, तो वो मेहनत करेगी, पूरी रात लगाएगी. मैं जो हूँ 2 घंटे में वो काम करके बैठ जाऊंगा. ठीक है. मगर जो मेरा वीक पॉइंट था वो गेटिंग दैट ऑन पेपर था. ओके. बिकॉज दिमाग में इतना कुछ चलता था. ओके. जब पेपर में जाता था ना, तो आई वुड थिंक यार, जैसे मैथ्स में था, अब वो वहां पे होता था हमेशा आप एवरी स्टेप शो करो. मेरे हाथ में दर्द हो जाता था, तो एवरी स्टेप तुम कभी शो नहीं करूंगा. ठीक है. आई वुड स्किप 3-4 स्टेप्स एवरी टाइम. और वो उर्दू का अगर पेपर है तो मैं 3 पेज ज़्यादा नहीं लिख सकता. तो अब रिक्वायरमेंट है 10 पेज की, होगी, सॉरी भाई मैं नहीं लिख रहा. मैं नहीं लिख रहा. तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि मार्क्स कभी मेरे नहीं आए. ओके. ठीक है. और इतना मैं बदनाम था कि यूनिवर्सिटी में एक बार हाँ, यूनिवर्सिटी में एक बार क्या हुआ कि मैंने एक टीचर से बहस की कि सर आपने ये मार्क्स मेरे कैसे काटे. अच्छा, थोड़ा सा बहस हो गई. जब बहस होकर मैं जब पीछे मुड़ा ना, तो सब लड़कियां मुझे देख रहे थे. मैंने कहा क्या हुआ भाई? तो बोलता आज तक तुम्हें कभी टीचर से मार्क्स पे नहीं डरते देखा. क्योंकि आप यू वुड बी ओके विद एनी काइंड ऑफ मार्क्स. तो ऐसा मजे की बात ये, स्कॉलरशिप थी, तो आई वुड एक्चुअली फाइट फॉर दैट स्कॉलरशिप. तो ऐसा नहीं था कि मार्क्स की वैल्यू नहीं थी, लेकिन मेरा ये था कि भाई मुझे पता है कि ये मेरी कमजोरी है, मैं लिखूंगा नहीं. तो अगर मुझे पहले ही पता है कि ये टीचर है, ये तो अलाउ कर देता है कम लिखना, उस पर कम ही लिखूंगा. ठीक है. वेरी कैलकुलेटेड. हाँ, वेरी कैलकुलेटेड. जो टीचर बोलता था कि नहीं यार लिखो ज़्यादा, तो नॉर्मली सब कोर्स ही ना लो. तो वी नीड टू बी कैलकुलेटेड इनफ. तो कभी कभी जैसे टीचर ने गलती की, वो मार्क्स नहीं दिए, तो मैं नॉर्मली उससे फिर बहस करना. और उससे एक होता है फेवर वाली चीज़. मेरे टीचर से हमेशा राइवलरी रही है. ओके. ठीक है. क्योंकि मैं वो हूँ कि कभी अपने आप को सेंसर नहीं करूँगा. मैं अपनी बच्ची को भी ये सिखाता हूँ. वो शी इज़ अ गुड, वेरी गुड स्टूडेंट. ओके. ठीक है, फर्स्ट आती है, मगर शी इज़ अ टीचर्स पेट.
तो अच्छा स्टूडेंट होता है अमूमन। नहीं, तो उसमें क्या होती है, मैं कहता हूँ दैट विल हैम्पर योर लर्निंग। Yeah. ठीक है, बिकॉज इफ यू आर गुड यू हैव क्वेश्चंस, बट द पॉइंट इज इफ यू डोंट वांट आस्क दैट क्वेश्चन इट इज बिकॉज you don't want to sort of disturb the teacher and stuff like that. I said, You no. shouldn't do that. Yeah, Not at all. you ठीक, should speak your mind. absolutely. अच्छा, मैं जो हूँ यूनिवर्सिटी में ये प्रॉब्लम रही थी कि मैंने एक कोर्स लिया जो कि सेकंड सेमेस्टर कोर्स था, मैंने ले लिया 7th सेमेस्टर में। अब ऑटोमेटिकली से सेकंड सेमेस्टर के बच्चे को कुछ नहीं आता, 7th सेमेस्टर में फिर आप बहुत कुछ कर चुके होते हैं। Right. और जब कोर्स लिया तो लिटरली वो टीचर जो बोले बोलूँ सर ये ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। फिर कुछ बोले, मैं बोलूँ यूँ नहीं होता, यूँ होता है। बाय द थर्ड क्लास मुझे समझ आया कि अगर मैं इसकी क्लास में मैंने पूरी क्लास ले ली तो ये टीचर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा एकदम। ठीक है, टीचर वाज लाइक अ फ्रेंड, और ऐसी बात है, वी हैड सम अंडरस्टैंडिंग फॉर द लास्ट 3-4 ईयर्स। मैं स्टूडेंट रहा हूँ वहाँ पे, बातचीत रही है उन टीचर से भी, लेकिन जिस तरीके से मैंने उनको तंग किया, ठीक है, 3 दिन क्लास में, तो मैंने कहा नहीं यार ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने क्लास लेना छोड़ी, बट व्हाट आई डिड वाज कि एवरी अदर डे मैं उनके पास जाके 15-20 मिनट बैठ जाता था। टीचर के पास, जस्ट मिंगलिंग, क्या बात हो रही है क्लास में, क्या पढ़ाया, ये सब जनरल। तो मैं ये भी ज़रा देख रहा था कि टीचर मुझे क्या तंग कर रहे हैं, क्लास में क्यों नहीं आए। तो उन्होंने तंग नहीं किया मुझे, बस ये कहते थे यार साकिब कल हार्डली है तो कल आ जाना, साकिब कल मैं क्विज लूंगा, कल आ जाना। ठीक है, ही वुड नेवर आस्क मी टू अटेंड द क्लास। आई एम फाइन। उसके बाद क्या हुआ, इसी तरीके से मेरे एक और कज़न है, वो उसने भी पूरी क्लास नहीं ली थी, वो ही वॉज इन कतर और समथिंग। तो वो आया, उसने कहा साकिब यार मेरी पूरी क्लास निकल गई है और मैंने क्लास ली नहीं है, और वो भी 8th सेमेस्टर का था। Right. तो मैंने कहा टीचर मुझे तो तंग नहीं कर रहे, बट आई हैव बीन कोऑर्डिनेटिंग विद हिम एंड एवरीथिंग, so he's not pressuring me to attend the class, so maybe try that. मैं उनको लेके चला गया टीचर के पास, गया तो टीचर ने कहा देखो भाई साकिब का मुझे पता है, he doesn't attend one class, he would still pass in flying colors. तुम हमारा नहीं अगर पता। अटेंड कर भी लोगे तो I can't really आई कैन नॉट गारंटी कि तुम पास होगे, क्योंकि तुम पेपर लेके तुम पास नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुम्हारी एबिलिटीज नहीं है वो डिफरेंट होती हैं हर एक इंसान की एबिलिटीज। ठीक है। तो उसकी वजह से उन्होंने कहा नहीं नहीं ये चीज़ जो है अगर साकिब कर रहा है तो मुझे पता है कि साकिब पास कर सकता है, तो इसकी वजह से मैं उस क्लास लेने को तंग नहीं कर रहा, लेकिन आई कैन नॉट गारंटी दैट फॉर यू एज वेल। तो ये भी चीज़ होती थी कि हम लोग टीचर को भी ऐसा गेज करते थे कि टीचर से एक बना के रखो, ठीक है, लेकिन उससे जो है आप ऐसी ही रखो कि कभी कभी टीचर को डिस्टर्ब कर देते थे आप। So that this is a very interesting story and I didn't want to interrupt you also because I think बहुत सारी इसमें से चीज़ें यूनिक भी हैं लेकिन बहुत सारी रिलेटेबल भी होंगी लोगों के लिए, क्योंकि कम ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं हम बहुत शौक से रोज़ाना क्लास में जाते थे एंड देन आगे की जर्नी इतनी एक अच्छी हो जाती है, आपकी मेहनत सफल कर जाती है, आप एक डिफरेंट ह्यूमन बीइंग की तरह इवॉल्व करते हैं, विच इज़ व्हाट वी सी टुडे साकिब। आपका बचपन जो था उसके बावजूद आपने चीज़ों को आइडेंटिफाई किया, आपने खुद आइडेंटिफाई किया कि जी रिटन में ज़्यादा कर नहीं पाते लेकिन कोडिंग और प्रोग्रामिंग का शौक था। उसी तरह आपने आइडेंटिफाई किया कौन सी क्लास आप ले सकते हैं आसानी से और कौन सी क्लास आप ज़्यादा लिए बगैर भी जो है वो फ्लाइंग कलर से पास कर लेंगे, विच मेक्स मी रियलाइज दैट द काइंड ऑफ प्रोफेशनल दैट यू आर टुडे, you have the ability to sit back and gauge things without saying much. Is this true? That is technically not true. Okay. Because मैं अपने आप में अगर सबसे बड़ी वीकनेस पाता हूँ, मुझे पाता हूँ कि आई कैन नॉट साइलेंस माई सेल्फ। Okay. ठीक है, मुझे जैसे अब राइट नाउ मैं हमेशा जो है ना हर चीज़ में बड़ा डीपली इन्वॉल्व हो जाता हूँ। Right. ठीक है, उसकी वजह से एक दिन ये कॉर्पोरेट कैरियर में एक चीज़ होती है कि इफ़ यू आर इंडिस्पेंसिबल देन यू कैन नॉट बी प्रोमोटेड, बिकॉज इफेक्टिवली आपको प्रमोट करेंगे तो आपका काम कौन करेगा। Okay. So the way to get promoted is to first get people who can do your work and train them. You have answered my question and that's exactly what I meant. आपकी इतनी अच्छी ये sensibility है. You think that silencing yourself would obviously, diminish your personality. You don't. But at the same time, you do calculate and gauge things very well. But the point is that's all going on my head. But I sort of need to be more forgiving or maybe more silencing myself in meetings
is something I try very hard to, Okay. but it does not come naturally to me. And that's fine. That's absolutely fine. Now you tell me, ये क्या ट्रेंड है भाई कॉन्टूर में कि जो आता है कहता है वो वेदर आप उसको मैका समझे या ससुराल समझे कि यहाँ बस यहीं का होके रहे उमूमन रह जाता है और आपको भी माशाल्लाह 11 साल हो गए. So you started as what and what are you working as now? I started as a senior software engineer. Uh-huh. Right now, I am a software architect. Mhm. But the point is, these roles really doesn't say anything. Mhm. ठीक है. When I joined Contour, I was senior software engineer, but before that, I was software architect. Actually, senior software architect. Right. ठीक है. But the point is, अगर आप ये बोलें कि why do people just get stuck in Contour? Not stuck. They're actually quite comfortable. Yeah, technically not stuck, but they just don't want to leave, basically. Right. And the reason are a bit twofold. One thing is, for me, I was very technical. The problem with that was there's a political aspect to this corporate job as well. Right. So you need to, do some maska polish to your boss and stuff like that. So that is something which you have to do in other organizations. When I joined Contour, I worked directly under Akhil Ashraf. So you guys actually had a podcast with him as well. So one thing, he is a graduate of the same year as I am. Okay. Okay. For me, for the first month, I had a meeting with Akhil and he said, "Do you have any problems?" I said, "I cannot work the time you work." Okay. He used to work around 1 to 9 Okay. or 10 or whatever. Or 12 to 9 or 7. So I was a morning person. Okay. And the official timing was 11 to 8. But I said, I'm not even comfortable with 11 to 8. Okay. So he said, okay, what do you want to work? I said, I want to work 10 to 7. He said, okay, it's your prerogative. Do that. And then the point was that when I used to leave at 7, everyone in the office was hard at work. But no one in Contour actually got back to me and said, okay, no, why are you leaving so early? Everyone is working and that's the culture. Right. No. I told Akhil that is my problem, and no one was like, even I had a boss named Andy. Once he had to set a meeting and he couldn't find a time. And he said, he called me and asked me, Saqib, I'm really sorry, but I need to have this meeting done this week and I cannot find a slot. And the only slot I can get it's 7 p.m. your time. I just need 20 minutes of your time. Can you please sit for 20 extra minutes? How polite. Yeah. And that was something that was never seen before. Yes. Like people Very don't rare. care for your time, and specifically when they are sitting abroad. Because there's a culture, specifically that is more true if the one sitting abroad is also Pakistani. So I don't want to talk that much about that. I haven't faced that in Contour, but that is true for other organizations. So they have to sit late, and that's the culture. Mm-hmm. But for me, I have found people in Contour, like my kid was born. I took 3 days leave and I came back after 3 days. Okay. And my boss was angry at me. क्यों वापस आयो? He said, why the heck are you at the office? I said, I don't have anything to do at home. So he said, no, your wife needs you. Then I have to call him after the scrum and I have to talk to him. I said, okay, the culture here is my wife left to her mother's house. Yeah. And there's no one at my house right Sweet. I don't have anything to do. I will come to the office and after the office, I will go to my in-laws and be there for 2-3 hours. But that's what is the culture. It's not, I don't need to help someone at home. So it's no use. Then he sort of calmed down. Otherwise, you would have thought कि घर पे बेगम और बच्चे को छोड़ के आ गए. So that thing was like my last job, and I like those people a lot. Right. And they are my friend till now. My company owner still sort of talks to me like he's my father, and like when I talk to him on the streets, we normally stand around for 2 hours. Right. And he was the owner of my company. He was not my boss. So, but the culture was that when my
first daughter was born, I could not pick her up from the hospital, and I had to do some project stuff. And it's very unfortunate, you know, the culture, it's not just in, you know, particular organizations. I think as a society, Yeah, in progressive developed societies, this is actually the normal, to be empathetic, to care, to understand कि जी maternal paternal leave दोनों होती हैं, etc. तो यहाँ पे आके you experience that, तो वो बहुत ही बड़ा pleasant surprise. बिल्कुल। तो ये चीज़ें रहती हैं। मेरा आई सॉर्ट ऑफ इन माय फर्स्ट ईयर मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था, एंड 23 मार्च की छुट्टी आई। इट वाज सपोज टू गो आउट ऑन 24th मार्च। Okay. तो मैंने अपने बॉस से बोला, यार आई नीड टू स्पेंड 2 hours एंड आई विल स्पेंड इट टुमारो ऑन 23rd मार्च, हाँ. so I can get it wrapped up cleanly. हाँ. He said no. He said it's just 2 hours. He said no, you won't work on your the day off. Meka, it's not something like Eid or something which there's a celebration going on. There's some programs on TV and we're doing nothing. Right. But he said no. If you do something, I will delete it. Okay. ऐसे भी bosses होते हैं. अच्छा, वो boss, he was the boss के he was never happy or never content with what we did. He was always saying, okay, you can do better. More, yeah. You can do Demanded better. more, yeah. But his point of view was you can do better in those hours. Interesting. I don't want you to work late and do better. No. You have those 8 hours and do better in that 8 hours. So साकिब specifically बताइए कि आपका operating group कौन सा है? What division do you work in? And what kind of work, what industry are you working for? Okay. So currently, basically, I'm working for Perseus, and it's Mopsys, the company's name. It's under MES Group. Okay. And the industry I'm working is basically pulp and paper. अच्छा. And what we are doing is actually we are creating monitoring software for pulp and paper industry machines. Okay. So if what I am doing, it's sort of a no-code environment. If you want to know what a no-code environment is, it's basically it's an environment in which you can develop your own applications Interesting. by dragging and dropping stuff and configuring stuff. So what we make it for, that is, if you guys have seen movies, specifically movies about trains being abducted and stuff like that, जी. you would have normally seen that there's a control center and there's a big screen there. Right. And it shows that this is the points where the train is, and it can go here and it can go there. And there are places it can go and where are the blockages and stuff like that. Those are displays. And those are sort of displays which we build. So Very cool. we can track which machine is doing what, and if that pipe is getting hot or not, and if this flow or this pipe is low, and if this machine is not working accordingly and stuff like that. It can create warning bells and stuff like that. Ah. But the point is that is different for each factory you work in. Right. So one mill might have totally different number of tanks and stuff like that. Other factory might be totally different. So that's why they have to create these displays themselves. Ah, interesting. I love the analogy कि जिस तरह movies में होता है कि trains जा रही होती है और controls होते हैं वहाँ पे. I think बहुत सारे लोग समझ पाएंगे अब. Okay. तो देखिए, एक प्रॉब्लम यही होती है कि हमारी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है ना, इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे जो टेक्निकल पीपल हैं, दे आर वेरी टेक्निकल. Right. ठीक है, दे वांट टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ कि मुझे क्या कोड लिखना है, क्या लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी है, क्या यूज करना है. बट दैट्स नॉट व्हाट लाइफ इज. दैट you are creating code to support a business. If you don't understand the business, then the code is useless. So effectively, what the whole business, and with Scrum and Sprint and stuff like that, it's about teaching the business to the developer. So developer needs to know what problem they are solving. That's a very different approach. Yeah. Back in the day, in the waterfall method, what happened was my boss, he knew what the customer wanted. He would create tasks specifically of what he wanted. And I didn't care what the customer wanted. And I would just develop what he said. And now it's his problem, how it fits to the business. There's always, some data lost between each, person. There's a, very good experiment in which you just have to say, okay, you want to create a tire. In the end, you will get a square. Because if it goes through 10 people, every time there's some data being lost. So that happens. Like Chinese whispers. Yeah.
So effectively, what with the Scrum method, everything Right. is about you need to teach the business to the developer, so the developer develops according to the customer's need, and that is what is very necessary in basically modern development, and that's what I normally teach my juniors and my team members. That if you don't understand the business, then it's no use what you're doing, because sometimes what happens is a person would be demoing the stuff and he would be demoing it to the business in totally technical terms. So this will happen and then this will happen and then this will happen. नॉट जस्ट ये कि उसमें फिर बिजनेस का उसका फुलफिलमेंट समझने में दिक्कत होती है, बट द पर्सन इज नॉट ग्रोइंग होलिस्टिकली ना. Yeah. So here the person is growing holistically also. And the point is, if the people is thinking only technically, then he have no idea, because he doesn't know what the problem is. How could he solve a problem in creative ways? Sense of ownership नहीं है वहाँ पे. Ownership नहीं. वो तो बोलता है मुझे इसने कहा ये काम कर दो, मैंने कर दिया. And if it works, fine. If it doesn't work, fine. What do I care? Right. ठीक है. तो हम लोग now modern application development, it's all about getting them the source of ownership. And in Scrum, if you are the Scrum Master, you're not a manager. Okay, so the team is deciding what they want to do, and they are agreeing on what they want to do, and you are facilitating them to actually do their best. Their best, absolutely. अच्छा, doing their best की बात, I'm going to stop you here. एक general encouragement भी यहाँ पे है, and senior leadership बल्कि खुद भी they have set a brilliant example of doing your best and then facilitating people. Senior leadership bhi, after all, at the end of the day, are regular people, aren't they? And these regular people, you have gotten the opportunity with one very special, but one person, a person who, on the other side of his professional life, does like doing fun things. So you went with the very beloved Aqil to do sailing, and something happened. So, this is a very interesting journey. I went to the UK with Aqil, and there on an off day, me, Aqil, and Tom Wien, who was our product owner, he said, "Okay, let's go to sailing." Okay. And I like adventure, anything adventures. Okay. If you ask me to jump off a bridge, I will probably. Okay. So the point is, we went sailing, and he was teaching us how to sail. And what happens in sailing is, if you try to turn the boat one way or the other, the sail is actually pushing the boat to one side. So if you try to turn, it will just go into the water. So what we need to do is, if you turn right, all the people on the boat will have to lean to the left to keep the boat straight. ठीक है, balance, ठीक है. So there are calls. So we were new, we don't know the calls exactly, and we have done it just once. So it was call of tally ho to go right and something to go left. I don't remember exactly, it might be wrong. But what happened is, it was Aqil's turn to try, and he called tally ho. He should have turned right, he turned left. Okay. And he turned left, but he said tally ho, so we tilted the boat to the left. It was already tilting to the left, and in a second I was underwater. Oh God. Okay. And the boat was flipping, but Tom Bien, he was an expert at sailing, so he just ran up the tilting board and he sort of tilted to the other side. So I was out of the water. But it was a really chilly day. It was probably like 4 degrees or 5 degrees. In the middle of the ocean? Not middle, it was a dam. Achha, it was a dam, okay. So it was not an ocean, but it was a dam, and it was pretty cold. And I was underwater, but fortunately we had those rubber jackets, so they didn't allow you to get wet all around. Life-saving jackets. It was not a life-saving jacket, wetsuits basically. Wetsuits, okay. Yeah. Probably we had life-saving jacket on top of it, but the wetsuit sort of helped us to and not get wet all around. So, but that was even going underwater, but it was really thrilling, and I sort of teased Aqil for a long term after that. क्या किया आपने? क्या किया? But yeah, these sort of adventures are something you sort of remember, and with traveling and stuff like that, these are some things which sort of are lifelong memories. Yeah, they are definitely. So adventurous की बात कर रहे हैं, तो आपको
बाइक्स का भी गालबन शौक है? बाइक्स का मुझे शौक है, लेकिन आई डोंट ट्रस्ट माई सेल्फ ऑन इट. So I actually had the bike I owned was the first bike I sort of, when I went to the office, it was hard to get to the office by bus, and I had to sort of I was doing studies as well. So at that time I wanted to have a bike and I didn't have the money. So what I did is I had a BC going, and I asked some loans from my father, and I just got the cheapest bike I could, and Okay. it was 77 year C70. It barely had any brakes, and it was a very thin bike and stuff like Okay. that. But I was very Happy. and I was, I was a bit carefree, and my nature is a bit aggressive, so I cannot do thing half baked. So, Okay. so the thing is, I tried to sort of, I want to drive fast and stuff like that, and I had so many accidents. Oh dear. But the benefit has always been that my mother always taught me to read Ayatul Kursi before every journey. Absolutely. So I have been to big accidents, and mostly just got out of it walking. And like I had one accident. It was it could have been very severe. I was driving and I sort of turned on the left. I didn't want to join the bridge. I turned on the left, but there was a big bus behind me, and Oh. they struck me, and I went rolling on Flying. one Oh side. God. The bike went on the other side, and the bus was coming towards me. So the bus driver, trying to not crash into me, he sort of got the bus on the pillar of the bridge, and it was, hanging up. Oh dear. So unfortunately, no one was injured. I'm so glad to hear that. But then the problem was that all the guys on the bus got out, and initially the bus driver sort of caught me and said, "What did you do?" And then everyone on the bus came out, and they just got the bus driver के because तुम he कहाँ was जा driving रहे थे? very Yeah, rash. yeah. And then the police officer was also siding toward the bus driver because they are sort of connected. Yeah, they are. So he was and then at that time, what everyone did is they got my documents, my keys, and the traffic police's keys and documents, and they gave it all to me and said, "You leave, and we'll just get rid of them." Oh my God. ज़्यादा ही एडवेंचर हो गया. Oh my goodness, no, seriously. सही तो अच्छा, ऐसे एडवेंचर से तो हम गुरेज करें तो बेहतर है साकिब. बट थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस. एंड अगेन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा बेदहानी में चलाते हैं, हर एक बस जल्दी में होता है. So yeah, okay. So enough of the bike adventures. I think that one is fulfilling enough. आपको खाना पकाने का, as you said, एक्सपेरिमेंट करने का शौक है, तो खाना पकाने itself का है या बिकॉज एक्सपेरिमेंटेशन का शौक है इसलिए कर लेते हैं? देखिए, मुझे जो है ना, खाने में शौक है ऐसी चीज़ों का जो कि नॉर्मल चीज़ों से आउट हो. अच्छा. ठीक है. मुझे आप बोलें जैसे राइट नाउ, अगर मुझे कराची में कहीं खाने का शौक हो रहा है, तो देयर इज अ लेबनीज रेस्टोरेंट अराउंड हियर समवेयर. हाँ, ओके. ठीक है. आई हैवंट हैड लेबनीज फॉर एजेस. ओके. ठीक है. तो क्योंकि उनके खाने ज़्यादा डल होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट खाने, हल्के खाने होते हैं उनके, मगर इट्स समथिंग डिफरेंट. तो आई लव टू ईट थिंग्स व्हिच आर आउट ऑफ द ऑर्डिनरी. ओके, इंटरेस्टिंग. समथिंग न्यू. मे बी यू लाइक इट, मे बी यू डोंट, बट इट्स न्यू. तो उस हिसाब से मुझे हमेशा ऐसी चाहिए जो कि घर पे नहीं. ठीक है, समझ आ तो गए. अगर बनानी है तो ऐसा कुछ करना है जो घर पे ना बने. ठीक है. देन आई विल ट्राई इट. ठीक है. कभी कभी होता है कि एक चीज़ बनाई, वो अच्छी बन गई, तो वो घर वाले अडॉप्ट कर लेते हैं. सही. ठीक है. लेकिन इट्स ऑलवेज, अगर मैं बना रहा हूँ तो वो ऐसी चीज़ बना रहा हूँ जो कि घर वाले नॉर्मली नहीं बनाएंगे. सही, समझ आ गई. ठीक है. गुड स्टफ. अच्छी बात है ये तो. अच्छा, आपकी ज़िंदगी में आपकी हमारी जो पहले भी बात हुई और अभी भी बात होते हुए समझ आई कि आपकी ज़िंदगी में और भी रहे होंगे, बट सिग्निफिकेंटली 3 लोग हैं जिन्होंने सॉर्ट ऑफ उस्ताद का रोल अदा किया. 2 आर your parents, because the way you've mentioned the things that they've taught you, whether it's reading dua or whether it's calculating the cost of and defending yourself कि मुझे ये क्यों purchase करना है, that's amazing teachings that have come from your parents. So, and thank you for sharing those very personal aspects.
तीसरा आपने जिक्र किया था कि एक उस्ताद थे जो आपको ग्लोबल कंपनीज के बारे में बताते थे, वो स्टोरी शेयर करें। अच्छा, ये जो है ना, अगेन इट्स अबाउट, मैं जो कहता हूँ मैं बिजनेस को अंडरस्टैंड ज़्यादा करना चाहता हूँ, ये भी ये जो मेरी टीचर है सर जुनैद इकबाल सिद्दीकी, ही इज राइट नाउ इन माइक्रोसॉफ्ट, ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन IBM एंड देन आई थिंक ही इज बैक इन माइक्रोसॉफ्ट इन डैलस राइट नाउ. सो ही वाज एन अमेजिंग टीचर. उन्होंने मुझे जो सिखाया ना, उन्होंने सिखाया कि देयर इज ऑलवेज अ कल्चर बिहाइंड एवरीथिंग. राइट। So if you are working on a language, for instance, like I was working in C Sharp, he said C Sharp is coming out from Microsoft. So now there will always be cultural uh, references from Microsoft. So how does Microsoft conduct its business? So, Microsoft has a tendency to say, okay, they want to get the developers to do something very fast. Right. It will work 90% of the cases, but it will have edge cases which won't be implemented. It will probably having Right. errors and stuff like that. So not ideal implementation in some edge cases. Similarly, if you work on Java, it will probably be perfect all around, but it will be pretty slow because perfection is not easy. So you need to understand these things before actually, So what happened is, once I was working in Gladstone in Contour, so we had to implement a new feature which we targeted a library called SignalR. So it was very brand new library. We didn't have any time to adjust to it. So how did we do that? We had a meeting and we said, okay, I think the SignalR will implement this way, and it will allow you to support this way, and you will get this done this way. And I said, okay, I believe it will work around this structure. So then one of my teammates said, okay, have you actually tried it out that much? मैंने कहा नहीं, अभी तक तो मैंने इंस्टॉल नहीं किया है. I am just saying it because I believe I understand what Microsoft will do. And he was saying, do you really understand what they do? They don't know what they want to do because it's brand new technology. I said, yeah, it's a brand new technology, but I thought of understand how they would approach the problem. Right. And how they would solve the problem. Right. So, and effectively, when we went to the implementation part, and I found that 95% of my my thought was basically correct. Right. And so that was something like that amazed the colleague, because I think that trying to understand how stuff works and how it should work, every culture actually enforces and how you work. Right. And you can sort of, it's not just about coding. Whatever you do, your upbringing, your culture, everything shows. And these organizations have their own culture. So They does do. Contour as well. And at that time, जब आपके टीचर बता रहे थे and he would help you understand, उस वक्त आप लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस समझ आती थी या नहीं? नहीं, उस वक्त नहीं समझ आती थी, मगर he was more about he was not teaching stuff which I could just get off the books. Right. ठीक है, he would say, okay, we are teaching studying this book, but I didn't know what the hell did he teach from that book. Because what he wanted to teach was like thinking in C++. That was a bit more philosophical book. So and that was interesting. He wanted to teach us something new and something interesting and something which I cannot just go online and learn. Understand. And बिल्कुल. I think that teacher has inspired me more than any other teacher. And I'm sure your conversation has inspired so many people. So you are also going to be, if you are not already, going to be a fantastic ustad. ताकि बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी और बातें हो सकती हैं, because you're a fantastic storyteller. But we would need to wrap up very shortly. एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, and I'll pick up something you had mentioned earlier, and that is, be very clear of your purpose. एक आपने ये बात की थी, and you also spoke about कि आप जो कर रहे हैं, प्लीज रिमेंबर दैट यू आर अ पाकिस्तानी एंड अ मुस्लिम, एंड आई कनेक्टेड द टू टुगेदर. सो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्पेसिफिकली लाइक व्हेन यू आर वर्किंग इन Contour, you are representing your country, your religion as well. So when you slack off at the office and stuff like that, you sort of portray to the international community
that Pakistanis really aren't very hard workers. Right. And for me, it's not about working hard as well. Like as a Muslim, we have sold these 8 hours of our life per day to this company. And effectively, if we are doing anything else which does not sort of go the vision of the company, then that's wrong. Okay. So, Contour has provided a lot of features to us. You have table tennis, you have other activities, and you can do a lot. And you can do them in your 8 hours as well. But, you should have a clear purpose. Right. The company has given us these 8 hours, and they want, in the end, they want the best productivity out of these 8 hours. If of us playing table tennis for 15, 20 minutes, 30 minutes help us in that, Yeah. that's great. But if it does not, then we need to stop doing that. Okay. And similarly, when you go outside, you have got chances to go to Canada. I have went to UK, Canada, Australia with Contour. When you go there, you are also sort of representing your company, your country, your religion. Yes. So you need to be pretty clear of what you would do, how you represent yourself, and you would need to understand that. And that's something which I normally keep on the top of my sort of to-do list at whenever I go and represent my country. And that is why you're doing so well in life, Saqib. As a person, as a professional, you are well-rounded, you are grounded. A lot less of what you were saying about yourself before. I think this was just so heartwarming speaking to you. जाने से पहले 2 चीज़ें. एक सवाल हम आपसे पूछेंगे जो किसी और ने पूछा है, और एक सवाल हम चाहेंगे कि आप पूछें. मतलब we are asking all of our guests to think of a question for our next guest, not knowing कि next guest कौन है. तो आपके लिए जो सवाल आया है, the previous guest doesn't know. उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा है, वो ये है कि AI का दौर है. And machine learning and AI are very slowly and gradually going to take over mundane tasks, maybe even jobs. Do you think your job will become, or your line of work will become redundant because of AI? And if the answer is yes, what is your game plan? For me, it's not going to become redundant. Okay. But you would need to be pretty good at what you do. Right. To keep doing what you do. Right. So for me, what I see is maybe मेरा जो development का aspect है, that will sort of get 50% less because AI would be doing a lot of the mundane tasks I do right now. ठीक. But understanding the business, understanding how to best solve that problem, and coming up with those ideas, that's something AI would be a bit far off. But the point is, it would have the data. Right. So you need to use AI in your thought process as well. Right. Embrace it. Embrace it, Okay. understand it, and sort of you extend your abilities using it. And that's how you survive in the next era. ठीक. So that is going to be a challenge for a lot of people. But I think, that's specifically the people working with legacy code. Right. Because effectively everything probably is online. And if they are there just because, it's hard to replace them, that's going to be a problem. ठीक. तो अपस्किल अपने आप को करने की जरूरत है. और अगला जो भी गेस्ट होगा उसके लिए आपकी तरफ से क्या सवाल है? अच्छा, मेरा सवाल जो है ना, मेरा एडवेंचरस एस्पेक्ट को लेते हुए है. If I would give you a choice, 3 choices, and you have to select one, and you have to do one, and one is backpacking through South America. Ooh, very nice. Other thing is singing in front of a stage. Okay. And the last thing is skydiving. इन तीनों में से कौन सी पिक करेंगे? कौन सी पिक करेंगे? Wonderful. Absolutely fantastic. Lastly, if you could take the place, the position, just to experience of any person in Contour for one day, a person जो कि एक certain post पे अभी है, उसका या तो काम या उसकी पर्सनालिटी या बोथ आपको फैसिनेटिंग लगती हैं, आप एक दिन के लिए वो शख्स अगर बन सकते हैं और उसकी जगह ले सकते हैं काम में, तो वो कौन होगा और क्यों? देखिए, ये जो है ना, बड़ा मुश्किल सा सवाल है. Because for me, if I would say I want to take the place of Bilal,
I'm not equipped for that. Just for a day to experience. Yeah, the point is, for me, I like to solve problems, Okay. but those problems are not associated with human that much. Okay. Okay, that is probably the most thing I don't like in my life. Okay. Because people are complicated. Right. And these people, Akil, Bilal, Kashif, and stuff like that, they have a lot of, humans are complicated and Human related problems बहुत solve करने होते हैं. complicated होते हैं. So, and most of their work is meetings. Right. Don't like that much. I find my fulfillment in solving technical problems and stuff like that. That's nice. But I would maybe like to take the place of Rashid Salim or something like that, because Okay. he does everything. He does man management, he does product management, and he does coding as well. And he's a very cool person. That is something I would aspire to do. साकिब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. Thank you. It was nice being here as well. It was pretty entertaining. I'm so glad that you think so. Thank you. Ladies and gentlemen, no doubt a very, very wholesome conversation. Till next time, this is me, Salmeen Ansari, saying thank you and Allah Hafiz.